طبعا مشاهدينا من جديد التطورات الميدانية حيث شهدت الساعات दोस्तों कल रात यूएस के लिए बहुत ज्यादा अगर आप उनका मल्टी मिलियन अब दोस्तों ईरान ने कहा भारत के किनारे आ रहे उन्होंने मार के गिराया फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, बाकी डिटेल बाद में बताएंगे। जो भी है दोस्तों, ट्रम्प के लिए एक बिग ब्यूटीफुल शाइनी टैंकर चुका है। आवाज तो बड़ी सोहनी आती है इससे। हाँ किन्ने क दी आती है दहाई है जे सही रही तो आप रख लांगे, नहीं तो मोड़ देंगे। बड़ी प्यारी आवाज है भैंस दी। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर। दोस्तों कल रात मल्टीपल इंसिडेंट बताए जा रहे हैं। एक किया है उनका मल्टी मिलियन शाइनी ब्यूटीफुल टैंकर या एयरक्राफ्ट टैंकर गिर गया है। अब दोस्तों ईरान ने कहा है हमने मार के गिराया है, हमारे जो इराकी रिवॉल्यूशनरी ब्रदर्स हैं उन्होंने मार के गिराया। बाद में बताएंगे। जो भी है दोस्तों सिस्टम होता है अपने आप कैसे दुनिया नहीं मालूम। खैर यहाँ पे दोस्तों ईरान कह रहा है सिर्फ इतना ही नहीं, ठहरो जरा, कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपका यूएसएस अब्राहम लिंकन है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और खत्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की आज़म का इज़हार। नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब अपील मार्शल से मिली भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के बाद लंदन वापस पहुंच गए। मुलाकात के हवाले से दुनिया में जारी तस्वीर में पाकिस्तान के कॉम्बैट प्रेस में लिखा गया कि इंतहाई गैर मामूली कहा ईरान के 5 तारानी इंकलाब का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइलों हमलों में निशाना पहुंचाने का दावा। ईरान की दावत है कि इराक की पोस्ट ने अमेरिका से ज्यादा मार गिराया। इराक के स्थानीय अमेरिका के करने पर इस्लामी अमेरिका के एक ब्रिगेड की 25 को मार गिराया है। ये दावा है कि अमरीकी तैयारी की इलाक की तमाम काम की दावा किया गया कि सुबह तैयारी को दुश्मन ने निशाना बनाया। जिसके काम की दावा सुबह तैयारी में किया और प्रभाव से इलाक से इजरायली फौज का गुज़श्ता रोज ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में 900 से ज्यादा एहदाफ के निशाना बनाने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इजरायली फौज ने एक बयान में कहा कि लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर जिनमें मुख्तलिफ फौजी तंजीबात को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज ने दावा किया है
लेबनान तब्दीली से हम लोग की नहीं है रॉस पर आचार्य चार सदा ब्रेंट और WTI पाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। आज कारोबार के दौरान एक बैरल ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत सिफर आचार्य 4% कमी के बाद 100 आचार्य $6 पर आ गई, जबकि WTI क्रूड ऑयल तेल आचार्य 7% कमी के बाद 95 आचार्य $5 पर। उसके बाद नहीं 500 में नहीं 350 रुपए की गैस इस्तेमाल की थी बाकी सारे उससे टैक्स था। खूब अच्छे से रन को स्कोर करते हुए 68 की पाकिस्तान आफ्टर 8.3 ओवर्स। चौथी गेंद रहेगी दोस्तों, 20 ओवर की जिसे फेस करेंगे बल्लेबाज मास सदाकत। 57 के स्कोर पर मौजूद है, 32 के नजर रखा है अभी तक उन्होंने सामना। फैबुलस फ्राइडे, फैबुलस इनिंग्स, बहुत ही शानदार और जानदार ये बल्लेबाजी। फाइनल से मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी के माहौल में एक अहम फौजी वाक़या पेश आया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अमरीकी एयरफोर्स का एक KC-135 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट
Mujtaba's first statement sparks unease in Israel as the 42nd wave of attacks gets underway. Minutes after Mujtaba's message, the Revolutionary Guard carries out a major coordinated assault. Fires continue across Israeli cities for a third day as Mujtaba's counteroffensive gains force. Iran employs Ahmad, Kharja, Khyber, and Fatah-class missiles in precision strikes deep inside Israel. Mujtaba Khamenei promises tighter control over the Strait of Hormuz in response to attacks on Iran. Supreme Leader Mujtaba assures Iranians their losses will be honored and their response will be remembered. Iran's Operation True Promise 4 has now entered a decisive new stage, marked by an extensive, coordinated barrage targeting US and Israeli sites across different regions. Within hours of Mujtaba Khamenei's first address as Supreme Leader, Iran unleashed a new wave of missile and drone strikes. The timing of the attacks suggests a deliberate signal of continuity and resolve under the country's new leadership. Following Mujtaba Khamenei's message, Iran's army leadership pledged to continue the nation's resistance until the last breath. The statement underscored the military's alignment with his authority and its readiness to sustain long-term operations if required. Tehran's officials described the 42nd attack wave as part of a broader, calculated strategy of retaliation against both the United States and Israel. They emphasized that these actions represent not isolated incidents, but steps in a continuing campaign of military and political defiance. The IRGC stated that this round of attacks was launched in honor of the martyrs of the holy month of Ramadan and in remembrance of the late Ayatollah Ali Khamenei. The Guard confirmed that heavy ballistic missiles and explosive-laden drones were directed at central Tel Aviv. According to the IRGC, these strikes were meant to demonstrate Iran's capability to reach key urban centers despite heavy air defenses. In its statement, Tehran confirmed the deployment of advanced Ahmad, Kharja, Khyber and Fatah missiles during the latest wave. Officials said the use of these weapons reflects Iran's evolving military technology. The Revolutionary Guard claimed responsibility for additional missile and drone attacks targeting what it described as facilities operated by the terrorist American army. The statement suggested that the strikes were aimed at deterring future assaults and asserting Iran's strategic reach. Iran's top military command reaffirmed its intention to maintain a robust and continued response to any US or Israeli action. Officials said the armed forces would remain on high alert and continue to respond decisively as long as external aggression persists. Iranian army in a statement said, and I quote, "The first enlightening and insightful message from the Supreme Leader and beloved guide has been heard with all our heart. It is a decisive order to confront the enemy and avenge the blood of the martyrs leader, Imam, and the precious martyrs of the current war. With a resolve firmer than before and motivation stronger than ever, we will continue our relentless fight against this invading and criminal enemy." Iran assures that, with the IRGC, it will stand until the last breath to defend the independence and territorial integrity of the Islamic Republic. By avenging the pure blood of the martyr leader, the valiant commanders and our dear compatriots, it will make the enemies of Iran regret their actions. On March 12th, Iran's newly appointed Supreme Leader, Mujtaba Khamenei, delivered his first national address, marking a significant moment in the country's political transition. His speech set the tone for Iran's posture at home and abroad under his new leadership. In his address, Mujtaba Khamenei paid tribute to his late father, Ayatollah Ali Khamenei, while speaking directly to the Iranian people about unity, resilience, and ongoing conflict with the US and Israel. He framed his message as one of continuity, national strength, and resistance in the face of pressure. Iran's new Supreme Leader address said, and I quote, "At the beginning of my words, I must offer my condolences to my master. May God hasten his noble reappearance on the heart-rending martyrdom of the great leader of the revolution, our dear, white Khamenei. This servant of yours, said Mujtaba Hosseini Khamenei, learned of the result of the assembly vote at the same time as he did through the broadcast of the Islamic Republic of Iran. For me, to sit upon a place where two towering leaders, the great Imam Khomeini and the martyr Khamenei, once sat is an exceedingly difficult task. I had the blessing of visiting his body after his martyrdom. What I saw was a mountain of steadfastness, and I was told that his sound hand was still clenched in a fist. This is what makes it so hard to sit on the seat of leadership after such a man. Closing this immense gap will only be possible with the help of the Almighty and with your assistance, O people." The insight and intelligence of the great Iranian nation in the recent events, along with its steadfastness, courage, and presence, led friends to admiration and enemies to astonishment.
It was you, the people, who led the country and guaranteed its power. In the recent offensive, some military bases were used, and naturally, just as we had issued a clear warning, and without carrying out any aggression against those countries themselves, we targeted only those bases. From now on, we will again, of necessity, continue this course of action, although we still believe in the need for friendship between ourselves and those neighboring states. These countries must clarify their stance regarding the aggressors against our beloved homeland and the murderers of our people. I recommend that they shut down those bases as soon as possible, for by now they surely have realized that the American claim of establishing security and peace is nothing but a lie. I repeat once more that the Islamic Republic, without seeking to establish domination or colonialism in the region, is fully ready for unity and warm, sincere, mutual relations with all its neighbors. In the seventh part, I extend my thanks to all the honourable figures who have supported it, including the grand authorities of ventilation and the various cultural, political, and social personalities, as well as the people who, in majestic gatherings, have come forth to express their renewed pledge of allegiance to the system, and also the officials of the three branches of government and the temporary leadership council for their sound measures and actions. करोड़ गरीब को फरार करके बाहर निकले। For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. What's the fastest movement? I requested the MSEC that we will have to speak to Putin and to Zelensky. The biggest newsmakers. The relationship with India is probably the most important bilateral relationship the U.S. will have for the rest of the century. The capital delivered quite an election result today. Expert analysis. The million dollar question today is how to stop this down to 50. Round of applause. I'm standing at the crossroad of the Kumbh Mela. Behind me are more than 100 Indian cars. Long form interviews. Exclusionary politics is effectively politics as well. You don't vote out because this is a small state. Deep dive into burning issues. It's often said we are secretly the richest country in the whole world. It's because of what sits underneath. Why exactly did the U.S. stop? It's brilliant. We don't have great news, we bring it down. नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। आपको याद है जब ये पूरा मामला शुरू हो रहा था, ईरान के इर्द गिर्द अपने जंगी जहाज लगा रहा था। अमेरिका बहुत नाम चल रहा था USS अब्राहम लिंकन का और USS जेराल्ड आर फूड का। बताया जा रहा था कि ये दुनिया के सबसे शानदार जहाज है जिनके ऊपर फाइटर जेट रहते हैं जो उड़ सकते हैं और उड़कर ईरान को तबाह कर सकते हैं। बताया ये जा रहा था कि जिस तरह से ईरान को उन्होंने घेरा है, चुटकी में 2-4 दिनों के अंदर अमेरिका पूरे ईरान को कब्जा कर लिया। आपको पता है कि अब इनका क्या हाल, एक एक करके हाल बताता हूँ। पहला, USS अब्राहम लिंकन, ये उनका जंगी जहाज था जिसमें डैमेज हुआ। ईरानी ड्रोन और ईरानी मिसाइलों से इसका अच्छा नुकसान हुआ है और बताया ये जा रहा है कि एक और तो उनका दूसरा था उसके साथ क्या हुआ, तो जिराल्ड आर फूड के हाथ है तो आग लगी है और उसके ऊपर कोई बम नहीं किया, कोई रॉकेट नहीं किया, उसके ऊपर दो किया, वो अपने आप को उसके अंदर हम इसके साथ जोड़कर आपको एक और खबर बता दें। कल ये खबर आई कि ईरान